Okay, welcome everybody to this event today. It's called, it's titled Semiconductor Fabs Are Coming. It's an event organized by IIT Bombay. And as is tradition, we'll request the Deputy Director, Professor K.V. Rao, to come and welcome everybody. Professor K.V. Rao, please. Good morning to you all. All of us, of course, we are fully aware, if you have read today's newspaper. Today is a special day, very special day, especially in India's journey in semiconductor technology. And all of you know that 3 semiconductor facilities are getting inaugurated today. You all know the first fab facility is coming up in Dholera, Gujarat, and 2 assembly and testing units are coming up, one in Gujarat again, and another one is in Assam, with a total investment of over 1.25 lakh crore. And in order to, it is obviously a prestigious thing that India now is embarking on. And our everyday's life is related to now this current day digitization technology, and for which becoming self-sufficient, even more than self-sufficient, is very important in the semiconductor area for India. In order to commemorate this particular event, which definitely is going to be a historic day, the Ministry of Education has actually coined this particular title for this today's event, which is happening across the country in various educational institutions, especially the institutions which are very strong in STEM. So the title given to it is India's Techade, Chips for Vikasit Bharat, very appropriately. And towards that, today also we are now celebrating or commemorating this event and also showcasing our strengths through this semiconductor conference, or you can call it a semiconductor workshop. And of course, the instruction is that it should be more of students, because today's students who are working in this area, they are the ones who are going to give growth wheels to whatever we are now going to do in semiconductor technology. Towards that, I think I thank Professor Ganguly, Udayan Ganguly, who is also professor in charge of our Center of Excellence in Semiconductor Technology, acronymed as SEMIX. Semi is for semiconductor, X is for everything related to semiconductor. So very nicely named center. And of course, in IIT Bombay, all of you know, is doing many things for several years. Earlier, we had this Nano Electronics Center, Center of Excellence in Nano Electronics, and various activities are pulled together. And now in 2022, we have formed this SEMIX. IIT Bombay has formed the SEMIX. And a lot of things are happening. And obviously, SEMIX will align with the semiconductor growth track of India. I am sure that there will be a lot of contributions from SEMIX. They are already contributing towards research, of course, innovation and entrepreneurship. Many things are going to happen. One of the important things, I think always Professor Udayan, whenever he presents, he talks about the shortage of skilled manpower or skilled personnel in this sector. And that is one area, in addition to the research, innovation and entrepreneurship, our SEMIX is also concentrating in filling that gap. Of course, IIT Bombay right now, I tell in all meetings that we are now industry, just like Industry 4.0, the parallel to Industry 4.0 is IITB 4.0,
which is nothing but innovation and entrepreneurship ecosystem that has been developed in IIT Bombay, and Semix also is contributing towards that. Definitely in the years to come, many startups will also come out of the Semix. With these few words, I welcome you all. Of course, we expected a lot of enthusiasm. Why I am saying this is because I am a civil engineer, Greek and Latin for me, a semiconductor. But still I have come here and want to see this historic occasion. And of course, there are events that are planned in this workshop, and our Honorable Prime Minister is laying foundation stone for all these three facilities which I just mentioned. And there is also we will be hearing Honorable Prime Minister speaking from 10:30 onwards. We will attend that event. And before that, I also thank our visiting professor who will be online delivering his own words of wisdom, Professor Sunil Rikki, and also Dr. Gopi, with whom we have very long association, applied materials. And we also read in the newspapers that MAT is going to supply actually equipment to that fab facility, which is great news. So with these few words, I once again welcome you all, and let us have a great day discussing about semiconductor technology and also listening to the words of our Honorable Prime Minister inaugurating those three facilities, which I told you are the milestone in the semiconductor journey of India. Thank you very much. Thank you, Professor Rao. We have somebody who's actually gone through the semiconductor journey. He's a visiting professor of practice among us, Professor Sunil Rikki. He also was the ex-GM and started the Intel Foundry Services. So without further ado, we would like to welcome Sunit. Sunit, floor is yours. Thank you, Udayan. Is there a way to verify that I can be heard? Yes, you can be heard. Okay. So, well, thank you for this opportunity to share my thoughts with you. In this talk, I will attempt to answer the question, is India ready? But first, what must India be ready for? More than 60 years after the emergence of semiconductor industry, semiconductors are now everywhere. They are a household word across the globe. They have found their way into nations' priorities worldwide, attracting about $100 billion in public investment today. Today, they generate $600 billion of annual revenue, and they promise to grow to $1 trillion by the end of this decade. Something big is happening worldwide. Or shall I say, kuch to ho raha hai. India is one of those nations investing public money. Its $10 billion on the table is significant by world standards, and it is unprecedented. But what does India want as a return on this investment? India wants to become a vibrant hub in global semiconductors. Understanding this mission at a deeper level requires us to confront its wide scope, both of the wide scope of the mission and that of the semiconductor world. The scope stretches across several vectors. Broad market applications cover almost all aspects of human life. Technology and product cycles range from research to development to high-volume manufacturing. Technologies cover circuit design to mask making to wafer fabrication to packaging to assembly and test. Various semiconductors are involved, from silicon to gallium arsenide to gallium nitride to indium phosphide to silicon carbide and beyond. The entire periodic table is now a playground for semiconductor innovation.
A wide range of academic disciplines in engineering and sciences are also involved. Industry involvement extends from startups to small and mid-sized companies to large multinational enterprises. Government ministries, departments, and execution bodies are actively engaged at both the central as well as the state level. The journey has begun. Initial progress is evident at various points in this complex scope, including the announcements today. Countless groups, cohorts, individuals are working on this mission, each focusing on one or more aspects of the spectrum of the mission scope. I'm honored to be a part of one such group, the CEMIC Center, a platform that is bringing the semiconductor industry and academia together to drive purposeful research, to develop a competent and sufficient workforce, to help entrepreneurs start and grow, and finally, to influence effective policy. This is our way of helping India become a vibrant hub of global semiconductors. So again, what must India be ready for? India must be ready for the chase. Its mission chase. This chase will require all of us to contribute across the board and across the broad spectrum of the mission scope. And to do that, we must recognize where we are in that spectrum and study how we can contribute. I know that there are students at all levels in this audience today. I hope many of you are motivated to explore semiconductors as a field for your multidisciplinary learning. And of course, as a field for your professional contributions. To be sure, the success of India's mission is not guaranteed. We are in a highly competitive global semiconductor market. We will need urgency, discipline, and the good old Indian innovation to put giant pieces of this complex mission together and ensure its success. So, is India ready for the chase? I say it is, because it must be. And with that, I end my talk and thank you very much for your attention. Thanks, Sunit. It's really exciting to have you work with us for the last whole year and to continue to work with us, because I think it's interesting for students to see that there are students, then there are PhD students, then there are professors, and then there are mentors to professors. And this is a lifetime of experience that goes into actually building organizations. So, so that's one piece. The other piece is whether how closely is semiconductors related to non-electrical engineering electronic spaces, and how is industry a part of that, right? And I think Professor Rao said that he's a civil engineer, and so this is still interesting to him. What we have as our chief guest and a keynote speaker is Dr. Gopichandran. He's from Applied Materials, and he'll tell you that semiconductors is not just about EE. It's about a confluence of many things, including materials, material science. And so we welcome Gopi to talk about how industry and academia have come together with the example of IIT Bombay and Applied Materials, and what lessons do we have to learn from it. So with that, let's put our hands together for Gopi Chandra. Good morning, everyone.
It's truly a momentous occasion for all Indians, leave alone Indians in this room, for the entire country, And with a lot of students here, I can only go back to my students' days. That was when software was just showing up in India. It was just coming up, and that was an option for me at that time to either choose software or continue with science. I certainly chose science, and at that point of time, software was the cutting edge. And invariably, most of the students, irrespective of whether they are from IIT or any other institute, would head towards software engineering, and software was, to me, till date, whatever big companies we have in the country, in many ways it's kind of a back-end stuff. It is not cutting edge, right? Truly, if you look at semiconductor industry today, it is truly cutting edge from all possible angles. And certainly this institute has put the seeds first for semiconductor, I would say. This was the only institute where we used to have a full wafer tool as well in the labs here, and our association from Applied Materials from IIT Bombay started way back in 2005. And even before that, our senior executives visited all across the country, and they decided IIT Bombay is the place to be. And so we started engagement right from 2005. And today, if you look, we have our own lab inside the campus. We have over 60 employees here. We have worked together with IIT Bombay in over 130 research projects. And it's still counting and it's going on. It's only going to get further strengthened because the ecosystem of semiconductor is actually unleashing from 2024. That is this year, and we have the Prime Minister going to talk to us today. And you will see, which was not the case, even though we started in 2005, at that point of time, we chose IIT Bombay because of its expertise, because of the talent in terms of the faculty are there. So we used that. At that point of time, the company's intent was, let's invest on people. Right, and so for people, we decided we will do our research and development for the country. And today, Applied Materials have completed over 20 years in the country. Only now we are seeing the light at the end of the tunnel in form of fabs coming in. And I'm sure Applied Materials tools will be seen in multiple places in this manufacturing sites or fabs of different companies. And certainly, Applied Materials is one such company which not only supplies tools, but does cutting-edge research on materials engineering. So very few companies in my experience so far, I have not seen companies investing 12% of their revenue in R&D. And this doesn't include some of these centers of excellence we have built across the globe. And in the month of June, when Prime Minister was in the US, I think it was May, I think. So at that time, we announced that we would do a supplier center in Bangalore, wherein we will bring in our suppliers, academicians, and co-develop parts and products for Applied Materials from India. And at the same time, we also made an announcement a month or two back before that to have this EPIC Center in Santa Clara, where we will work along with our customers, Applied and the universities in the US to develop actual products. And so it's really a very, very good time as we speak. And today, as I said, our association with IIT Bombay is so strong that we work in different areas of semiconductor and products, materials, and all of that. Just to mention, I have experience mostly, just to add to that, civil engineers are also most welcome to be in semiconductors, truly interdisciplinary. I have never worked in semiconductor until I joined Applied Materials. Barring 6 months, I did some etch-resistant material development. So, I have worked on light bulb, I have worked on aero engines, and I am today working with Applied Materials and working in semiconductors. So all skills are welcome in semiconductor. You don't need to actually have semiconductor background alone. If it is there, it gives you a head start.
but otherwise any discipline is very welcome in this. Just to give an example, if you have to look at our parts that go into our chambers, certainly civil engineering skills are utilized there, how to make it better, how to make it withstand the test of time in terms of having non-corrosion coatings and things of that kind. For the students, I would say this is the best time. I wish I was younger, I was a student now, because you are going to get an opportunity to work on cutting edge. And from the country's point of view, even though we have entering in from 28 nanometer nodes right now, but with the talent that we have, with the kind of investment that have been planned, I think we can spearhead this. For multiple decades, the government had the intent, but there was no commitment. And so finally, we see that today we have not only the intent, we have the commitment and also the leadership to take it forward and to, as in applied materials, we always say, make possible a better future. And I'm sure we will do that from the country for the world, let alone only for India. So that's what we will do. Of course, talent will be a big thing. We can supply talent for the world. But most importantly, we are doing groundbreaking stuff right now, wherein this talent can find a job within the country, that too in cutting edge research. And if you look at what's happening in semiconductor space, all these tools will not only help make these chips and all of that, but two inflections are happening at the same time. One is on the quantum materials, where India can certainly play a role, and all of the knowledge that we have gained through semiconductor can be applied there. We can push the boundaries there from India for the world. And the other area I think we are very good at, because of we made so much strides in the area of software and all of that. Gen AI is catching up everywhere, and I think students can get benefit out of that. And what semiconductor can offer is a mix of everything. So we need that cross-discipline approach to solve some of the toughest problems that are going to be in front of us. And if we miss this opportunity, we'll stay at 28 nanometers. I think as a country, we owe to be leading this era. And I think Applied Materials Association with IIT Bombay is a good example. We have been interacting for so many years now, 15 plus years, with a lot of projects. A lot of our employees are from this campus. We have internship programs going on. We have collaboration work going on. And today we also have collaboration, jointly funded programs also from Government of India and Applied Materials with IIT Bombay and few other institutes. We have certainly expanded quite a bit in other institutes also, but our major interest is with this particular campus, primarily because we are here. We have seen the benefit of working with real smart faculty and students from this campus. So I think this is only going to get strengthened. And if there are ideas, if there are opportunities, we'll be more than happy to discuss further. And I think today we should cherish the moment that semiconductor is finally here. Fabs are going to be here. People we have already. We just need the fabs to start functioning. And with the kind of intent and commitment from government and companies like Tata's and others, I'm sure it's going to happen. And it will open multiple doors, leave alone one door. Like when I was a student, today you will have multiple doors. You can pick which door you can work on. And I think that is the benefit of being a student from campuses like this. You have an opportunity today. You don't need to pick something that comes your way, rather than you can pick and choose what you want to do. And Applied Materials will continue to work with IIT Bombay for years to come. And we have a lot of smart young faculties as well, and established faculties. So we want to leverage all of that in different domains of semiconductor, be it packaging, be it materials, be it processes, be it computational science itself. Because what we need is to survive and maintain the edge in this industry is to innovate at a rapid pace. I think the only way we can do that is by collaborating, and that is what we get immensely benefited by working with people who are slightly away from the industry itself, because that's when you get some cool ideas coming in
I will end by saying that, there's a famous dialogue in one of the earlier Hindi movies, Mere Karan or Arjun aayenge. Lab was always here. Now Fab is also coming. Fab time is ahead for the country and for the students, faculty, and everyone in the country. So thank you very much. Thanks, Gopi. So I think we saw a very interesting progression. We had Professor Rao, who is of course excited because I think when semiconductors industry comes, it's one of the highest investment industries. And I think a major fraction of the investment is in R&D. So the institute has much to gain. Then we had Professor Sunit Riki. He is helping us from his years of experience as an executive, shouldering how to grow this institution because this is a very important time. We had Gopi here, a good friend, where we see that industry is actually enmeshed in IIT Bombay, has been so for many years, 15, 20 years now. And that's the third piece. Now I would like to call on Professor Vasi, because if we have been holding our breath for the last 10 years, there's somebody else who's been even more breathless. So, Professor Vasi, welcome on stage. Thank you, Udayan, and it's a real pleasure for me to be here. It's been a long journey, but we are at the end of our journey, or we have reached the goal. It's been a long journey for India, for IIT Bombay, and as Udayan hinted, for me also, starting really in the 1980s. And I must tell you one thing right away, and that is IIT Bombay has been at the forefront of this whole semiconductor, microelectronics activities in India from the very beginning. We, of course, set up the Semiconductor Complex Limited in the early 1980s. But soon after that, in the mid and late 80s, there was actually a push by the government, by the Rajiv Gandhi government, to actually bring in a whole lot of, for our semiconductor idea to go global and to bring in a lot of people from outside, and which started off with that, and IIT Bombay, by the way, was involved with that also in the, I guess it was the mid or late 80s. But it did not go anywhere. However, our work at IIT Bombay continued, and we had, of course, many projects in semiconductors. Professor Rao mentioned the Center of Excellence in Nanoelectronics. I'll also mention, of course, what I consider the path-breaking Indian Nanoelectronics Users Program, which actually trained hundreds of people, not only from IIT Bombay, but from all over the country, and therefore disseminated the semiconductor expertise all over. Also in the 2000s, we had another major effort to set up a global fab in India, Hindustan Semiconductor Manufacturing Company and others, in fact, 2 or 3 major initiatives were there, but that also did not take root. Of course, on the other hand, at IIT Bombay, besides the CEN and the INUP, we now have the CEMIC. So I'm kind of paralleling the developments in India and the developments at IIT Bombay. And of course, now finally, I think we are right there. Fabs will happen, are happening. The other aspects, the design and the packaging, that's also going to happen. So we will get integrated into the global semiconductor ecosystem, which is very necessary. We have to be a part of this much larger ecosystem, which is starting to happen now. So it's really a great day for us in India, for us at IIT Bombay, and for me personally. So I'm really happy to be here. Thank you so much. So I think it's fairly evident to you that this is not a week-long wait for a project to end and you to
celebrate victory. It's been about 40 years in making. And what I really like about this is the kind of role academia has played. Because while industry will look at what is today and make money and drive engines, academia must bet on high risk elements and things that are speculative and things that if we had would make a big difference. So we have a center called Center for Semiconductor Technologies, and what we would like to now do is to invite some faculty members to stage. I think we need some chairs. I don't know if it's possible to get. Yes. Yeah. Maybe while it is going on, so I'll quickly talk about semiconductor SEMICS as a center. Okay. So maybe you can just put up the presentation. I'll spend 2 minutes while we welcome the panelists on stage. Can you go to the beginning? Yeah. So this is, I just want to set the context to this, right? And I'm really hoping, I don't think we have too much time, so we want to get the chairs in quickly, if possible. But I want to just quickly say what SEMICS is. So if you go forward, can you, oh, I can do this? Ah, lovely. I can't change this actually. Maybe I can change this. Ah, it's working somehow. It's all working. Okay, so this is a book called Chip Wars. I don't know how many people have heard about Chip Wars. Okay, so our largest foreign exchange drain is because we have to buy semiconductors, right? Every time you buy a laptop, every time you buy a phone, you're essentially taking a shovel and throwing money out of the country, right? And this is correlated with our growth. It's a big problem. It's probably more important than oil today, which is one of our biggest problems. Now, if you go forward, okay. So why should India succeed? The answer is people sitting in the room are the most important piece of the puzzle. There's human capital. Who produces the best talent? I don't know if you know these people, but they happen to be just from IIT Bombay. And they are leaders of the free world of semiconductor technologies. So this gentleman, Satish on the left, is from material science, is now, what's he? He's the VP at Applied Materials, controlling the Silicon Technology Group. Subbu Iyer used to lead IBM. He's now, there's a US CHIPS Act, and he's leading the packaging capabilities. Shankar is one of the corporate VPs at Synopsys, which is a software company. Well, it's actually a software simulation, emulation, and IP company, right? And you can look at all these guys, and they all happen to be from IIT Bombay. They were all sitting here at some point, not here, but in the classes here. And there was one difference. The difference was that they all did their undergraduates and masters here and then took off and did a PhD somewhere else. Going forward, this is a new group. You will see people from different, more recent graduates. They all have significant research experience. And the research is done at IIT Bombay. And the reason research is so important is because semiconductors is driven by innovation. So without further ado, what I would like to do is call on the faculty members who are part of the panel.
The panel is about, is IIT Bombay ready for the first Indian fab? And the question is, are we ready to train talent which will make us industry leaders? Industry leaders not just by saying this, but also compete against the West, right? People who sit in the US, wear their ties and go to work. Can we do it from here, right? And that's a question for us. So I'll call upon Professor Saurabh Lodha from EE to join the panel. He's from electrical engineering. Professor Pradeep Dikshit from mechanical engineering. Professor Srinivasan Ramakrishnan from chemistry. Professor Kasturi Saha from electrical engineering. Professor Abhijit Sangle from material science and engineering. And Professor Ravi Gudi from Dean ACR's office. He's a Dean ACR. And I would be moderating the discussion. But what I want to do also showcase, okay, there's a paucity of chairs. So semiconductor is hard, people have to stand. Yeah, so that's okay. This is okay? All right. Stand and deliver, right? Yeah, so when things start, then everything isn't as set as you want it to be. So, I think there's enough people to sit down, maybe. Only 15 minutes, so I think it's. Yeah? Okay, so I think 1, 2, 3, 4. Yeah, I think there's enough chairs. 1, 4. Yeah, it's okay. Just go ahead. All right. Okay. So I guess the first questions I would ask Saurabh. So Saurabh, is India ready? And talk about the training piece of Fabs. Yeah, I think since we've been coordinating a lot of training workshops in the semiconductor space for the last almost 10 years, I think we are ready, as Sunit said, but I think we need to accelerate a lot in the next few years to supply manpower for the fabs and for the assembly and test facilities. What we've been doing so far, even running courses almost every other month, is not sufficient. So the other thing is we need to build training specific facilities. Currently we use our research facilities to train students, industry, but that's not viable in the long term. So we need to have specifically targeting training. We need facilities for that. We need to scale up significantly. IIT Bombay alone cannot train the manpower needed for the semiconductor industry. But we are certainly at the forefront of it. We started off in 2012 with the first semiconductor training course in India. And since then we have been running this course, but we need more scale and we need it across the country. Thank you, Saurabh. I'll ask Professor Gudi to comment. So, I think one of the things we talked about is our alum, right? And of course, we can do what we want to do as faculty and students. But that's a fixed pie. Are our alum excited to engage and help us contribute? Yeah, thanks, Udayan. Yeah, I must say that IIT Bombay is fortunate to have several of its illustrious alumni occupying very senior positions in both academia and leadership. You just saw a glimpse of this on the screen. They have been supporting IIT Bombay's strategic growth in these semiconductor areas through several initiatives that they have taken by themselves, but also through interactions with the administration at IIT Bombay. I would just like to cite some of those. For example, Synopsys did this advanced lab in semiconductors very recently. There are, of course, we have applied materials. There are very, very long-term engagement through the electrical engineering department and also through the research park, where they have been very strong partners. Also, I must say, in fact, I'm just coming out of a teleconference with another group of alumni who basically are investing into the talent pool at IIT Bombay, especially the undergraduates and the postgraduates
the PhD internship levels and the like, primarily to look at how you catch the undergraduates early. For example, at the end of second year, provide them summer internships potentially leading towards a full credit course and so on, where they get exposed to various nuances of semiconductors in the interdisciplinary area and be able to contribute as they graduate, at the end of their fourth year, they are able to make a substantial contribution. So in several ways, I would say that alumni have been very, very strong partners with IIT Bombay in several areas, but specifically in the area of semiconductors, they have been really, really strong partners as we have seen over the last couple of decades. Thank you, Professor Goody. So after you guys graduate and become really rich, you guys should remember to cough up, but more importantly, help us with your knowledge. We'll go to Professor Abhijit Sangle. He wears two hats. One is that he's part of material science. Well, he doesn't wear two hats. His previous hat was that he used to work for applied materials. So what is the opportunity for material scientists in this space? Yeah, definitely. So I was, like Udayan said, part of applied materials before beginning my career here as a professor, as an assistant professor. So some of the important things, so often I think it is, there is an oversight. People, when you think of semiconductors, one generally thinks about, electrical engineering, electronics engineering, circuit design, all of that. Of course, those things are there, but a number of materials engineering challenges, especially something that Gopi spoke about earlier on, those need trained material scientists and material engineers also. And from that point of view, for example, those people who are actually working on the fab floor, they are essentially delivering these, or they are essentially solving these materials engineering problems, be it, depositing different thin films, etching them, lithography, all those different steps. Material science is at the core of each one of these problems, and the study of material science is definitely useful in that area. A number of people nowadays are being employed who are from material science background, not just from EA background. So I would definitely encourage students who are from material science background to look at semiconductor industry as an exciting career. There are definitely a number of opportunities, number of cross-disciplinary problem statements which you can solve being a material scientist. You can bring in a different perspective which will not be necessarily available with those from traditional core electrical engineering background, and I think that is something where material scientists can play a huge role in. Thank you, Abhijit. A company whose name itself has applied then the materials pretty much means that materials is pretty important. So we'll go to Srini. So Srini, you are a chemist, right? A chemist. What the hell are you doing here? Good question. Yeah, well, we work on electrodes and materials development for brain-machine interfaces, so which roughly falls in the ambit of sensors and medical devices. Speaking of imports, another huge import industry in India is medical devices in general, right? Something like 90% of their medical devices in India are imported, probably more. And broadly speaking, a lot of these devices are essentially a combination of electrodes, interconnects, and electronics, right? And this, I personally believe, is a bit of a low-hanging fruit because of the sheer scale of the imports. We can make a big dent, other than perhaps quantum materials, in the near frame, where we can actually be a leader to the world. And one example of that I can give you is a former colleague of mine who came back with me to India, started a company in Mumbai which manufactures these neural electrodes, manufactured in IIT Bombay in this nanofabrication facility, and he's been exporting these probes internationally for the past couple of years. So this is a good example. So this is for both clinical and non-clinical use. These are very, very small electrodes, less than 5 micrometers. So this is an area, for example, where actually we can be the leader, and this can expand into all other types of medical device sensors, for example, glucose sensors, etc., etc. So I think medical devices in general is another sort of a hot area where we can really tap into given where we are today. And semiconductors are obviously going to play a huge role, which is why I'm here.
Thanks, Shini. So I mean, this is the whole magic of this stuff, right? So semiconductors, in my mind, is the fundamental technology to make things small, and many things happen when things are small. That's what probably Kasturi is going to talk about, because while she's an electrical engineer, engineering professor, she poses to be one because she's actually a physicist. And she is leading the quantum effort across the country. But the question for us is, okay, so sure, there's quantum, but is semiconductor even relevant for quantum, or are we just fooling ourselves? Okay, so I think semiconductors is pretty much the back end of quantum. That is how I would see it. If you go one by one down this here, I mean, I think we've touched upon pretty much all the things that are necessary and will be required, all the way from sources to the detectors, lasers to the detectors. They are semiconductors, so we will need the industry here in India to be able to cater to the indigenous needs for our devices. And again, touching on the materials themselves, we will need the materials, and so it's semiconductors that will be ultimately required for making the quantum computers or even the sensors. So diamond-based sensors diamond is a semiconductor, and therefore all of these are required. And going further, to finally develop a viable technology, you also need packaging, and therefore it is absolutely essential to take into account all of the things which semiconductor industry is going to enable us for India, for here, and for quantum we will need all of them, and including the manpower training, because we need the processes to be run in the fabs, and therefore we need the manpower to run those fabs, and so therefore everything what we've discussed here is absolutely necessary for the success of the National Quantum Mission. Thank you, Kasturi. So physicists can do anything. In this case, she wants to take up my job as a moderator, which is to invite Pradeep, because Pradeep is a mechanical engineer. However, he seems to be excited about the new opportunities in semiconductors. So, Pradeep. So from the mechanical engineering point of view, there are three major areas which can be directly utilized in the semiconductor industry. The very first is basically about the equipment design and the process control, right? So whenever we talk about semiconductor manufacturing, you need to ensure that the uniformity, deposition uniformity, etching uniformity has to be in very, very good control, typically less than 8%, right? And this is exactly where mechanical engineering are going to be important for tool design and process development. And the second one about which I am personally very much excited is about the semiconductor packaging. So many of you have heard about this OSAT kind of plants which are going to be opened up across India, okay, including one in Assam and Gujarat. And when you talk about semiconductor packaging, where the chip is ultimately going to make a kind of a product, including the several layers of interconnections, right? You need thermomechanical reliability, you need warpage analysis, and so on. So all these different aspects of the semiconductor packaging is going to need to be expertise from mechanical engineering. Okay. Now, when we talk about how IIT Bombay can basically play a role, so traditionally mechanical engineering was focusing on more on the metals and on the large dimensions. Now we are already trying to develop the courses which are going to be focused not on the metals but on semiconductors, polymers, ceramics, and also talk about the lower dimensions in micrometers. So in a couple of months, we are going to have a dedicated courses in this particular domain. So I believe that, okay, IIT Bombay Mechanical Department is definitely going to play a very critical and important role in this particular domain. Thank you, Pradeep. So I guess you can see that, semiconductors is not E, not just E, right? But the question also is, what are the challenges, right? So maybe I'll ask Saurabh to tell us how should the institute reorient itself to actually make sure that semiconductors is something that we collectively play for, and how does CEMIX play a role? I think the institute has proactively taken a role by starting the CEMIX Center. I think that was the key step to bring various departments under one umbrella, various faculty under one umbrella. So I think that step has been taken. Now we all need to work together to strengthen this center and its various verticals.
one challenge I do see is, how we enthuse undergraduate students to be a part of this entire journey. We have a lot of support from masters and PhD students. We need to get undergraduates involved. But I think CEMIX is the perfect start for us to take forward. And the institute has been very supportive in terms of pushing project proposals and other initiatives through the CEMIX Center. So in that sense, we've had a great start for the last 1.5 years, built upon what we Thank you, Saurabh, for... else wants to comment? So I was thinking that we can ask some questions. We have 5 minutes. So I'm wondering if somebody has a question. IIT Bombay students are supposed to be fearless. We are supposed to speak truth to power. Here are a lot of powerful people. So you might as well shoot out your question. How many people have some, have significant interest in semiconductors? You may raise your hands. Okay. All right. So it's pretty. So do you guys have a question? Yeah, please go ahead. What's your name, affiliation, and then shout out your question. Please stand up. Sure, go ahead. No, just say it. We have been playing a game of catch-up. So what can we as students do to leapfrog and come to the forefront? Yeah, I think who will take this? Kasturi? No, you want it? Yeah. Can we do? Yeah, can we? So question is, can we catch up, or are we just always going to lag? Because both Sunit talked about the fact that it's going to be challenging, and Professor Vasi talked about it's taken us 40 years. So I think it's a very pertinent question. Yeah, I think some of the newer areas in terms of semiconductors, right? For example, the newer sensors which are coming up, more and more technologies, wherein pretty much everybody is relatively at the same stage. If we are aiming ourselves to go and start 3 nanometer, 5 nanometer fabrication straight away, it will be very challenging. So we'll be always playing catch up in that sense. But some of these niche areas, flexible electronics comes to my mind, one of the areas. Different processing routes, wherein pretty much everybody is at the similar stage. I think that is somewhere we can leapfrog and probably be leaders even. I just wanted to add a few more areas there, like quantum, solar, compound semiconductors for power electronics, and so on. These are areas where there is, the catch-up is not as significant as in CMOS. So these are the areas where we can move fast and leapfrog and catch up more easily. So, if anyone knows. Swarup, go ahead. Question. Time check. Whenever it starts, I'll stop speaking. So not a question, but a comment in response to this one, is that when it comes to students, if you are an MTech student here working with Professor Mariam, then you are not lagging with respect to students anywhere in the world. Our industry has been lagging, and we must help our industry catch up. But academia has largely not lagged, certainly not IIT Bombay. Yeah, fair point. Professor Vasi, please. I thought I'll just also add on to this. Catch-up seems to imply it's a competition, a race between 2 or 3 people. But I think we should look at semiconductor ecosystem really as a team sport where all of us have to contribute and each one does its part very well. So let's stop worrying too much about catch-up. As Swarup just said, we are doing some outstanding work. We can specialize and become a part of the bigger global ecosystem. Question, yeah. Maybe I should be doing that. Good morning, sir. As an undergraduate student, how do we gain from this or contribute towards this? So Which now department? that we are, I'm from metallurgy department. Yeah. So who will take this? Abhijit?
Yeah, I think one of the things that you can look forward to is, approach there are different faculty members, not just in material science department, but other departments also. What I would suggest is सहर्ष to आप get सभी that को सूचित करना exposure, चाहेंगे you reach out to भारत them के and माननीय do projects with them. प्रधानमंत्री That's my महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हार्दिक अभिनंदन Okay, so I think we'll thank the panelists. It was a wonderful session, and the Prime Minister is online, so we have to, और भारत के लिए एक उज्जवल leave the floor for this important message. Thank you very much. आरंभ प्रतीक है इस समृद्ध यात्रा में हमारे पथ प्रदर्शक भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को स्वावलंबन एवं आत्मनिर्भरता से विभूषित कर रहे हैं। आज का ये कार्यक्रम इसी का प्रतिबिंब है। कार्यक्रम के आरंभ बिंदु को स्पर्श करते हुए मैं अनुरोध करूंगी माननीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि आप कृपा करके स्वागत संबोधन प्रस्तुत करें। श्री अश्विनी वैष्णव जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गुजरात एवं आसाम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, केंद्र एवं राज्य सरकारों में माननीय मंत्री महोदय, टाटा एवं सीजी पावर के अधिकारी, दोनों राज्यों के अधिकारी, ताइवान से जुड़े साथी और कॉलेजेस में जुड़े 30 लाख से अधिक यंग माइंड्स, एक साथ 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स के भूमि पूजन के इस ऐतिहासिक समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, किसी भी राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा पीरियड आता है जब उसके भविष्य की नींव रखी जाती है, जब उसके सपने पूरे होते हैं और जब उसे विश्व में नई पहचान मिलती है। और ऐसा तभी संभव होता है जब राष्ट्र का नेतृत्व विजनरी हो, डिसाइसिव हो, फॉरवर्ड लुकिंग हो। आज राष्ट्र में ऐसा नेतृत्व है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, डिसाइसिव, विजनरी, फॉरवर्ड लुकिंग, कठिन से कठिन फैसले करने वाले और अपने जीवन का एक एक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। साथियों, 1962 से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को भारत में स्थापित करने का प्रयास चल रहा था। आज सक्सेस मिली है और ये सक्सेस केवल और केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के क्लियर विजन और डिसाइसिव लीडरशिप के कारण मिली है। आज का दिन इतिहास में दर्ज होगा। आने वाली कई जनरेशंस विकसित भारत के निर्माण में आज के दिन को याद करेंगी। आज एक साथ 3 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का भूमि पूजन है। इन तीनों प्रोजेक्ट्स और हाल ही में हुए माइक्रोन प्रोजेक्ट, इन 4 को मिलाने से भारत में 4 बड़े सेमीकंडक्टर प्लांट तैयार होंगे और भारत में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री स्थापित होगी। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री फाउंडेशनल इंडस्ट्री है। हर वो चीज जिसको ऑन या ऑफ किया जाता है उसमें सेमीकंडक्टर लगता है। चाहे घर में लाइट हो, फैन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, स्कूटी हो, बाइक हो, कार हो, ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, फैक्ट्री में लगने वाली मशीनें हो, कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन हो, हर चीज में सेमीकंडक्टर लगता है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के मिशन में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और सबसे अधिक खुशी की बात यह है कि इन 4 सेमीकंडक्टर प्लांट्स में से एक प्लांट भारत के नॉर्थ ईस्ट असम में आज लग रहा है। कितनी खुशी का वो दिन होगा जब अमेरिका में, यूरोप में, जापान में मेड इन असम, मेड इन गुजरात और मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप से बनने वाली कारें दौड़ेंगी, लैपटॉप बनेंगे, कंप्यूटर बनेंगे, मोबाइल फोन चलेंगे। आज के इन तीनों प्लांट और माइक्रोन के सेमीकंडक्टर प्लांट में एक और खासियत है। डबल इंजन की सरकार में कैसे काम तेजी से होता है, ये चारों के चारों प्लांट इसका उदाहरण है। माइक्रोन के प्लांट का
माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने अमेरिका की स्टेट विजिट के दौरान जून 2023 में अप्रूवल किया। 90 दिन के अंदर अंदर गुजरात सरकार ने जमीन दी, सारी की सारी परमिशंस दी और फैक्ट्री का काम चालू हुआ। वैसे ही मोदी जी अपना खुद का रिकॉर्ड खुद तोड़ते हैं। टाटा और सीजी पावर के प्लांट 29 फरवरी 2024 में अप्रूव हुए और 15 दिन के अंदर अंदर आज माननीय प्रधानमंत्री जी इन तीनों प्लांट्स का भूमि पूजन कर रहेंगे। ये विश्व में रिकॉर्ड है। ये संभव होता है तभी जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जैसा डिसाइसिव लीडर एक देश में आते हैं। राज्य और केंद्र सरकार दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आज हमारे साथ यंग और एनर्जेटिक 30 लाख से ज्यादा जो साथी वर्चुअली जुड़े हैं। आपसे मैं कहूंगा साथियों, नौजवान साथियों, आपके भविष्य का निर्माण करने वाली ये इंडस्ट्री है। आपके फ्यूचर को सेव करने वाला ये फैसला है और ये फैसला केवल और केवल मोदी जी ले सकते हैं। इसलिए जब आप अपना निर्णय लें आने वाले कुछ दिनों में, तो याद रखना आपके भविष्य का ध्यान केवल और केवल मोदी जी रख सकते हैं। इस बात को आप अपने मन में रखना जब आने वाले कुछ दिनों में आप अपना देश का फैसला लेंगे। इस ऐतिहासिक समारोह में माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका और सभी साथियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। निसंदेह आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा होने वाला ये शिलान्यास आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाएगा और देश के सुनहरे भविष्य का निर्माण करेगा। अब मैं चेयरमैन सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस लिमिटेड श्री विलायन सुबैया से संबोधन का अनुरोध करती हूं। श्री विलायन सुबैया। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Chief Ministers of Gujarat and Assam, Honorable Ministers Vaishnav ji and Chandrasekhar ji, colleagues, our partners and guests, Namaskaram. 75 years ago, my grandfather manufactured India's first bicycle. That was what the country needed at that time. Times have changed. Semiconductors are the new bicycle. These are the very basis of the modern manufacturing economy. They are critical to India's Atmanirbharta. Today is not just about laying the foundation stones of Tata's 2 plants and our plant, but the very foundation of India's emergence in the modern economy and an announcement of India's arrival on the global semiconductor stage. Why did we have to wait until now for this moment? What Bharat is now witnessing is as revolutionary as independence itself. We are seeing an awakening and a resurgence that India has never ever seen before. This government's ability to foresee what Bharat needs to be a world leader is absolutely unprecedented. Government and industry are collaborating effectively, leveraging each other. मैंने सोचा अगर चिप्स का है इंतजार तो सीजी है तैयार। Until now, Indians have helped other nations strengthen their leadership position in the world order. Brain drain. When I graduated from IIT, 140 students out of my class of 290 left for the US. This will no longer be the case. From now on, we will design for Bharat. We will make for Bharat. We will build Bharat. We are fortunate to have a very strong Japanese partner, Renesas. We asked Renesas who will be leading the initiative from their side. And they said Viresh Patel, who is here with us. मैंने बोला ये वीरेश पटेल तो जापानीज थोड़ा है। But this is the nature of the world today. Country or company, Indians are in leading roles.
And that's something we ought to be proud of. We are excited to set up this initiative in Gujarat. We come from Tamil Nadu. In Tamil Nadu, we have 79,000 temples. Gujarat has 50,000. It seems that both Tamils and Gujaratis are fond of going to temples. And that's basically because we all understand that there's something much bigger than ourselves. For me as well, yoga and meditation is important. In India, we understand that sadhana and bhakti actually help us become better leaders, help increase our intensity, our energy, our focus. So together, in the presence of Adi Yogi, we will create an intensely powerful semiconductor ecosystem that is built on the foundation of spirituality. I've written a few lines in lighter vein. हम सब हैं एक परिवार, हमारा डोसा आपकी चाट, देश का विकास सेमीकंडक्टर्स के साथ, तेज रफ्तार सीजी के हाथ. To rising India, जय हिंद, प्रणाम. Indeed, it's a historic day of silver line in the sky of growth and development of Bharat. और अब समय है चेयरमैन टाटा ग्रुप श्री नटराजन चंद्रशेखरन द्वारा संबोधन का. महोदय, आपसे विनती है कृपा करके अपने विचार प्रस्तुत करें. श्री नटराजन चंद्रशेखरन. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, thank you for gracing us with your presence on this historic occasion. This event is possible because of your enduring vision to bring the semiconductor industry to the shores of our country. Thank you, sir. Bahut bahut dhanyawad. I am also privileged to welcome Honorable Chief Minister Shri Bhupendra Bhai Patel ji, Honorable Minister Shri Ashwini Vaishnav ji, Honorable Chief Minister Shri Himanta Biswa Sarma ji, and Honorable Minister Shri Rajiv Chandrasekhar ji to this event. Dignitaries from Government of India, Ministry of Electronics and Information Technology, India Semiconductor Mission, governments of both Gujarat and Assam, distinguished guests, ladies and gentlemen, and members of the media. I am thankful to all of you for your presence here in Dholera and Jagi Road, Assam, for the foundation stone laying ceremony of India's first semiconductor fab and the first indigenous semiconductor assembly and test facility. Today is indeed a very, very special day for India and for the Tata Group, with the foundation stone being laid simultaneously for our projects in Dholera and Jagi Road, one in the east and another in the west, 2,500 kilometers apart. These semiconductor manufacturing hubs will have a very lasting impact on the entire nation. The ecosystem from across the globe will mobilize to have India as their preferred semiconductor destination. For our fab, we are very excited to partner with Taiwan's Power Chip Semiconductor Manufacturing Corporation. The executives from PSMC are joining this meeting today on video. They have given us access to a very, very broad portfolio of technology. Our partner is a leading foundry company with very extensive manufacturing experience in running mega fabs. The semiconductor industry is innovation driven. It is another foundational industry, like steel was for, and steel is for physical infrastructure. Semiconductor is the foundational industry for everything digital. We look forward to closely partnering with industry, academic institutions,
and every ecosystem player to build semiconductor talent and infrastructure of tomorrow right here in India. We will be creating more than 50,000 jobs in this journey, and this is just the beginning. Today, every major economy is looking for self-sufficiency in semiconductor supply chain. There are three fundamental reasons for this. First, the chip shortages during the pandemic made us all realize the importance of electronics and our dependency on the global supply chain. Second, with the cyber warfare becoming a commonplace, self-sufficiency in semiconductors is a must and a matter of national security. And finally, domestic semiconductor manufacturing ecosystem is a must-have to galvanize the indigenous product ecosystem of tomorrow. In the spirit of the Tata Group and its core value of pioneering, we will deploy our deep customer insights and develop innovative solutions with agility, boldness, and courage. From the very beginning, we have been fortunate to pioneer several businesses, and today our journey of building semiconductor chips has begun. Semiconductor chips have a defining role to play in every industry. Like Minister Vaishnav said, automotive, communications, advanced computing, AI, green tech, industrials, medical devices, defense, consumer electronics, you take every industry, semiconductor chips are very foundational in nature. For the first time, India will have capabilities to serve semiconductor demands of both domestic and global customers with the chips built in our factories in India. I would like to thank you for your trust in the Tata Group as we embark upon this historic journey of India's decade, chips for Viksit Bharat. Finally, in the words of our founder Jamshedji Tata, the community is at the heart of everything that we do. We will build world-class social infrastructure and thriving communities both in Dholera and in Jagi Road in partnership with the Government of Gujarat and Government of Assam. Thank you again for this opportunity, and thank you, Prime Minister, for your leadership and vision and laying the foundation for a developed India. Thank you very much. धन्यवाद महोदय। वाकई में किसी महत्ता को समझना और फिर उस महत्ता को विकास से जोड़ना ही दूरदृष्टि है। पूरा भारतवर्ष देश के विकास एवं आत्मनिर्भरता को विभूषित करने वाले माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को अपार स्नेह की धरोहर से अलंकृत कर रहा है। आज भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय के शुभ कर कमलों द्वारा शिलान्यास होने वाले सेमीकंडक्टर यूनिट्स में असम की ATMP यूनिट भी शामिल है। तो आइए जाने असम के माननीय मुख्यमंत्री महोदय कितने आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। मेरा सविनय निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री असम श्री हेमंता बिस्वा शर्मा जी से कि आप इस शुभ घड़ी में अपने भाव व्यक्त करें। श्री हेमंता बिस्वा शर्मा। भारत की परम आदरणीय प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे कैबिनेट मंत्री भारत सरकार की श्री अश्विनी वैष्णव जी, गुजरात के सम्मानीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल जी, टाटा सन्स के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन जी, CG पावर के चेयरमैन श्री सुबाया जी, आज हमारे साथ कनेक्ट हुए सारे अतिथिगण, मैं आसाम वासियों का ओर से आप सबको स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री जी, हम जब आसाम में रिजोल्यूशन देश का सबसे पहले पारित किया था, मैं आज भी मेरा याद है, आपने हम लोगों को बोला था कि A फॉर असम। आज यही आपका जो वाक्य था,
इसको ही आज हमने साकार होते देख रहा हूं। आसाम को लेके नॉर्थ ईस्ट भारतवासियों का मन में एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल बैरियर था। लोग जब कोई भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होते थे देश में, लोग कभी उत्तर पूर्व को कंसीडर ही नहीं करते थे कि नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ करना संभव है। लेकिन प्रधानमंत्री जी, आपका निरंतर उत्तर पूर्व का भ्रमण, आपका असम वासियों और उत्तर पूर्व के लिए आपका अगाध प्रेम का कारण आज भारत का सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन का पहला दिन ही असम को शामिल होने का सौभाग्य मिला है। असम वासी और उत्तर पूर्व आपको हमेशा याद करेगा, एक देश का जो एक नेग्लेक्टेड रीजन था, एक नेग्लेक्टेड रीजन को आपने टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन का पहला शरण में लेके आया। ये हमारे लिए बहुत बहुत गौरव का बात है। मैं पूरा असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा मन में कोई भाषा नहीं है, मेरा खाली आज मैं इतना ही बोल सकता हूं, मैं असम में ही जन्म लिया हूं। कभी मैं सोचा भी नहीं कि असम विल बी द अमंग द वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन सेमीकंडक्टर रिवॉल्यूशन। ये काम आपका नेतृत्व में संभव हुआ। असम वासी आपको कभी नहीं भूलेगा। असम का इतिहास में और असम का आने वाला पीढ़ी हमेशा आपको याद करेगा, आपका प्रेम का कारण आप। और हमें भी, हम यही आपको आश्वासन देता हूं कि असम, जो आपने असम का ऊपर ट्रस्ट रिपोर्ट किया है, कॉन्फिडेंस रिपोर्ट किया है, उसका जो एक टेस्ट है, वो टेस्ट में हम खरा उतरने का पूरा कोशिश करूंगा। मैं अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अश्विनी वैष्णव जी ने हमें मार्गदर्शन किया, कैसे शुरू करना है, कहां से क्या लाना है, सारे हमें पूरा ये समय उन्होंने मार्गदर्शन किया। मैं अश्विनी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। टाटा सन्स का साथ असम का बहुत बड़ा संबंध है। ये आज से ये संबंध नहीं है, ये बहुत दिन पहले से ही हमारा ये संबंध है। और टाटा ने ही ये हिम्मत किया ज्योग्राफिकल बैरियर को तोड़ने के लिए। मैं चंद्रशेखरन जी और तमाम टाटा ग्रुप को धन्यवाद देता हूं। और मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप एकदम बहुत बढ़िया असम में इकोसिस्टम मिलेगा। और आपको कभी, आपने जो ये सिद्धांत लिया, इसका कारण आप कभी रिग्रेट नहीं करेगा। आपको खुशी होगा, आपको अच्छा लगेगा कि यू हैव चूजन ए करेक्ट डेस्टिनेशन एंड चूजिंग नॉर्थ ईस्ट you have contributed immensely for the development of this great region and great nation. प्रधानमंत्री जी, हमारा सामने लाखों लोग मौजूद हैं, सब आपको दोबारा अभिवादन करते हैं। और असम का इतिहास हमेशा एक आपको युग पुरुष का नाते आपको हमेशा याद करेगा। मेरा कोई भाषा नहीं है, मैं खाली आपको धन्यवाद देता हूं दिल से, असम वासियों का दिल से। भगवान आपको लंबी आयु दे और भारत को विश्व गुरु बनाने का जो सपना है, आपका मार्गदर्शन में, आपका हाथ में ही भारत मां विश्व गुरु बने, यही मेरा कामना है, यही हम लोग का आशा है। और हमेशा आप ऐसे ही उत्तर पूर्व को आशीर्वाद देते रहे, असम को आशीर्वाद देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। इस शुभ बेला के उत्साह की तरंगें चहु और आभास की जा सकती है। और पूरे देश को इस गौरव की अनुभूति देने हेतु एक बार पुनः मैं शिल्पा भावना करबद्ध रूप में प्रणाम करना चाहूंगी हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। विकास की इस अविरल बेला में गुजरात के धौलेरा में सेमीकंडक्टर फैब विद 50,000 WSPM कैपेसिटी एवं सानंद में सेमीकंडक्टर APMP
यूनिट फॉर स्पेशलाइज्ड चिप्स का शिलान्यास अब से कुछ ही देर में माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। तो गुजरात की ये धरती इस आरंभवर्ती क्षण को किस प्रकार संजोए है, आइए जानते हैं माननीय मुख्यमंत्री गुजरात श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी के शब्दों में। माननीय, आपसे अनुरोध है कि कृपा करके उपस्थित गणों को संबोधित करें। श्री भूपेंद्र भाई पटेल। भारत के सर्वप्रथम सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट के भूमि पूजन समारोह में हमारे बीच वर्चुअल माध्यम से उपस्थित वैश्विक नेता, विकास पुरुष, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, आसाम के जनप्रिय मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा जी, हमारे साथ मंच पर भी उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी जी वैष्णव, डॉक्टर महेंद्र भाई मुजपरा, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखर जी, सीजी पावर के चेयरमैन श्री वेलिया सुबैया जी, सीईओ श्री डॉक्टर रणधीर ठाकुर, उपस्थित सभी महानुभाव, सभी वर्चुअल माध्यम से जुड़े सभी साथी मंत्रीगण, सभी धारा सभ्य श्री और वाला प्यारे स्टूडेंट, इंडिया टेकेड चिप फॉर विकसित भारत के इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री जी गुजरात को भारत का सेमीकंडक्टर हब बनाने वाली परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए हमारे साथ उपस्थित है। मैं एक बार फिर माननीय प्रधानमंत्री जी का इस विशेष उपहार के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं। हम सब इस बात के साक्षी हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई की विजनरी लीडरशिप में भारतीय उद्योग हर दिन नई ऊंचाई हासिल कर रहा है। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के तहत उनके प्रयासों से आज हम ऐसे कई कार्यों को संभव होते हुए देख रहे हैं जो कभी हम मुश्किल लगा करते थे। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर भी उन्हीं सेक्टर में से एक है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि समस्या और संभावना में सिर्फ सोच का ही फर्क है और समस्या को संभावनाओं में बदलना ही मोदी जी की गारंटी है। भारत में टेक्नोलॉजी का विस्तार तेजी से बढ़ रहा है। हेल्थ, एग्रीकल्चर, लॉजिस्टिक ऐसे कई सेक्टर्स में स्मार्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डे टू डे लाइफ में शामिल हो गए हैं। इन सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के मूल में सेमीकंडक्टर, चिप और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ही है और विश्व को रिलायबल चिप सप्लाई चेन की जरूरत है। प्रधानमंत्री जी के दिशा दर्शन में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में गुजरात को भारत का केंद्र बनाने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के लिए विकसित गुजरात का जो विजन दिया है उसे साकार करने के लिए गुजरात प्रतिबद्ध है। गुजरात के पास प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को जमीन पर उतारने की अपार क्षमता है। सेमीकंडक्टर जैसे उभरते सेक्टर को प्रमोट करने के लिए गुजरात देश का पहला राज्य है जिसे डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाई है। हमारी सेमीकंडक्टर पॉलिसी की खास बात यह है कि भारत सरकार द्वारा अप्रूव्ड सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अपने आप ही गुजरात में अप्रूवल मिल जाती है। धौलेरा में विकसित हो रहा सेमीकॉन सिटी भी भारत में एकमात्र डेस्टिनेशन है जहां सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़ी सभी जरूरत का ख्याल रखा जा रहा है। विश्व की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां गुजरात की इन्हीं फैसिलिटीज से आकर्षित भी हो रहे हैं। माइक्रोन कंपनी के बाद गुजरात में सेमीकंडक्टर से जुड़े 2 प्लांट की आधारशिला रखी जा रही है। ये हम सभी के लिए गौरव के क्षण हैं। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में मिलने वाली
सभी निवेश अवसरों का लाभ लेने के लिए हमने एक नोडल एजेंसी गुजरात स्टेट इलेक्ट्रॉनिक मिशन को ऑपरेशनल किया है। आज धौलेरा में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड और सानंद जीआईडीसी में सीजी पावर अपने यूनिट स्थापित करने जा रहे हैं। आप सभी को यह जानकर खुशी होगी, जनवरी 2024 में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में श्री एन चंद्रशेखर जी ने घोषणा की थी कि टाटा ग्रुप धौलेरा में एक विशाल सेमीकंडक्टर फैब यूनिट स्थापित करेगा और ठीक 2 महीने के बाद हम सभी इस समारोह के साक्षी बन रहे हैं। इतने ही कम समय में इस यूनिट की स्थापना का काम शुरू हो जाना, यह प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की उपलब्धि का जीता जागता उदाहरण है। इन दोनों यूनिट्स की स्थापना से लगभग 50,000 से अधिक रोजगारी के अवसर खुलेंगे। गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग होने वाले इस सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग न केवल भारत में मौजूद इलेक्ट्रिकल व्हीकल इंडस्ट्रीज, टेलीकॉम, ऑटोमेटिव, डिस्प्ले और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर में होगा, बल्कि साथ ही ग्लोबल सप्लाई चेन का भी हम हिस्सा बनेंगे। ये यूनिट्स हमारे देश में चिप फैब्रिकेशन में अपनी क्षमता को विकसित करेंगे और भारत को विश्व स्तर पर सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई चेन में शामिल भी करेंगे। धौलेरा में उपलब्ध ये इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज सेमीकंडक्टर जैसे ग्लोबल डिमांड वाले सेक्टर्स के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा अहमदाबाद और धौलेरा को जोड़ने वाले एक्सप्रेस हाईवे, रीजनल रेल और धौलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेमीकंडक्टर सेक्टर से पूरे इकोसिस्टम को जरूरी लॉजिस्टिक उपलब्ध कराएंगे। प्रधानमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। इनके इस विचार को वास्तविक रूप देने के दिशा में भारत जल्द ही सेमीकंडक्टर सेक्टर में ग्लोबल प्लेयर बनकर उभरेगा और गुजरात इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर स्टेट बनेगा। इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। धन्यवाद महोदय। भारत में विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को शक्ति देने हेतु अब समय है माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी के कस्तूरी करों द्वारा तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज के शिलान्यास का। मैं अनुरोध करती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप कृपा करके रिमोट के बटन के माध्यम से तीनों सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज का शिलान्यास कर अनुग्रहित करें। धौलेरा गुजरात की टीईपीएल फैब फैसिलिटी का शिलान्यास भारत के मंत्री जी द्वारा किया जा चुका है और अब हो रहा है मोरेगांव असम की टीईपीएल ओसेट फैसिलिटी का शिलान्यास। आरंभ के इस चंदन पर संपूर्ण राष्ट्र की शुभेच्छा। और अब सानंद गुजरात के सीजी पावर ओसेट फैसिलिटी के शिलान्यास के हम सभी साक्षी बन रहे हैं। इति शुभम। अब प्रस्तुत है इन परियोजनाओं पर बनी लघु चलचित्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजनरी लीडरशिप में भारत आज जिस स्केल और स्पीड पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है। इसकी शानदार मिसाल है हमारा अपना सेमीकंडक्टर फैब, जिसका सपना देश ने देखा था 1962 में, यानी 62 साल पहले। बीते 6 दशकों में कुछ कोशिशें हुई, लेकिन इच्छा शक्ति की कमी के कारण देश का ये सपना कभी साकार नहीं हो सका। वक्त ने करवट तब ली जब देश ने जननायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदारी सौंपी विकसित भारत के निर्माण की। करोड़ों देशवासियों की आकांक्षाओं के साथ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को जोड़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब एक धर्रे पर चल रहे देश का गियर बदला तो भारत ये सेमीकंडक्टर फैब का सपना साकार हो उठा। भारत सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा एनर्जी कंडक्टर बनने के लिए हर चेकबॉक्स को टिक कर रहा है। भारत आज अपने टेक फ्यूचर को जिस स्पीड के साथ आकार दे रहा है उसका एक और उदाहरण है माइक्रोन। जून 2023 में जिसकी घोषणा होने के 90 दिन के भीतर ही
गुजरात के सानंद में प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया गया था और अब इस साल दिसंबर तक पहली चिप का निर्माण होने की संभावना है। अपने इन चारों मेगा प्रोजेक्ट्स के साथ भारत ने चौथी औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्री 4.0 में अपनी अहम भागीदारी तो सुनिश्चित कर ही ली है, लेकिन साथ ही चिप मेकिंग के क्षेत्र में ग्लोबल लीडर भी बनने जा रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के पीछे भी हमारी यही भावना है। भारत की स्किल, भारत की कैपेसिटी, भारत की कैपेबिलिटी का पूरी दुनिया को लाभ हो, यही भारत की इच्छा है। आज 3 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह के साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को एक नई बुलंदी मिल रही है। सरकार इन प्रोजेक्ट्स को 50% की बड़ी आर्थिक सहायता देगी। गुजरात के धोलेरा में हर महीने 50,000 वेफर्स बनाने वाला सेमीकंडक्टर फैब प्रोजेक्ट, असम के मोरी गांव में हर दिन 48 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट और गुजरात के सानंद में हर दिन 15 मिलियन चिप्स बनाने वाला आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओसैट प्रोजेक्ट। इन तीनों प्रोजेक्ट्स के साथ सरकार 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से देश में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की एक सुदृढ़ आधारशिला रख रही है। अमृत काल में भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर की विकास यात्रा तेज गति से जारी रहेगी और भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनकर उभरेगा। वाकई आज के इस अभूतपूर्व शिलान्यास में माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पूरब और पश्चिम छोर को मिलाकर आज एक ऐसे भविष्य की नींव रखी है जिस पर विकसित भारत पल्लवित होगा। और इस उपवन के उद्यानपाल भारत के माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के स्वागत का जय घोष करते हुए मैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से संबोधन के लिए अनुरोध करती हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, श्री नरेंद्र मोदी जी। नमस्कार। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अश्विनी वैष्णव जी, राजीव चंद्रशेखर जी, असम और गुजरात के मुख्यमंत्री, टाटा ग्रुप के चेयरमैन श्री एन चंद्रशेखरन, सीजी पावर के चेयरमैन बेलायन सुभैया जी, केंद्र, राज्य एवं इंडस्ट्री से जुड़े अन्य सभी वरिष्ठ महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज का ये दिन ऐतिहासिक है। आज हम इतिहास भी रच रहे हैं और उज्जवल भविष्य की तरफ एक बहुत बड़ा मजबूत कदम भी उठा रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े करीब 1.25 करोड़ रुपए के 3 बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। गुजरात के धोलेरा और साणंद में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, असम के मोरी गांव में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी हो, ये भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बनाने में मदद करेगी। मैं सभी देशवासियों को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए, ये महत्वपूर्ण शुरुआत के लिए
एक मजबूत कदम के लिए इस आयोजन को लेकर के बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज इस कार्यक्रम में ताइवान के हमारे साथी भी वर्चुअल रूप से शामिल हुए हैं। मैं भी भारत के इन प्रयासों से काफी उत्साहित हूं। साथियों, इस अभूतपूर्व अवसर पर हमारे साथ देश के 60,000 से ज्यादा कॉलेज, यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट भी जुड़े हुए हैं। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड ही है। मैंने मंत्रालय से विशेष आग्रह किया था कि आज का ये कार्यक्रम देश के नौजवानों के सपनों का कार्यक्रम है और इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज इस कार्यक्रम में हमारे युवाओं को जोड़ना चाहिए। आज का आयोजन भले ही सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट की शुरुआत का हो, लेकिन भविष्य के भारत के असली स्टेक होल्डर्स अगर कोई है तो ये मेरे सामने बैठे हुए मेरे युवा, मेरे नौजवान, मेरे स्टूडेंट्स, यही मेरी भारत की शक्ति है। इसलिए मेरी इच्छा थी कि भारत के छात्र इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी जरूर बने। आज वो देख रहे हैं कि भारत किस तरह प्रगति के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत उपस्थिति के लिए चौतरफा काम कर रहा है। इन प्रयासों से उनका भी आत्मविश्वास बढ़ेगा और आत्मविश्वास से भरा युवा कहीं भी हो, वो अपने देश का भाग्य बदल देता है। मैं इस कार्यक्रम में देश के कोने कोने से शामिल प्रत्येक छात्र का स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, 21वीं सदी टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है और इलेक्ट्रॉनिक चिप के बिना उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। पहली, दूसरी और तीसरी औद्योगिक क्रांति के समय भारत अनेक कारणों से पीछे रह गया था, लेकिन अब इंडस्ट्री 4.0 चौथी औद्योगिक क्रांति के नेतृत्व के इरादे से आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। हम एक पल भी गंवाना नहीं चाहते और हम इस दिशा में कितनी तेजी से काम कर रहे हैं, आज का ये कार्यक्रम इसका भी एक उदाहरण है। हमने 2 साल पहले सेमीकंडक्टर मिशन शुरू करते हुए
इनिशिएटिव लेने की घोषणा की। इसके कुछ ही महीनों में हमारे पहले एमओयू साइन हो गए और आज सिर्फ कुछ महीनों के भीतर हम 3 प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास कर रहे हैं। इंडिया कमिट्स, इंडिया डिलीवर्स एंड डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, दुनिया के बस कुछ देश ही आज सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और कोरोना ने हमें ये सबक दिया है कि दुनिया को एक रिलायबल और रेजिलिएंट सपोर्ट सप्लाई चेन की सख्त जरूरत है। भारत इसमें एक बहुत बड़ी भूमिका निभाने के लिए तत्पर है। भारत पहले ही एक स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर है। आने वाले समय में हम सेमीकंडक्टर सेक्टर से जुड़े प्रोडक्ट्स का कॉमर्शियल प्रोडक्शन करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब भारत इसमें भी एक ग्लोबल पावर बनेगा। भारत अभी जो फैसले ले रहा है, जो नीतियां बना रहा है, उसका भी हमें स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है, हमने कानूनों को आसान किया है। बीते वर्षों में हमारी सरकार ने 40,000 से ज्यादा कंप्लायंसेस खत्म किए हैं। भारत में निवेशकों के लिए एफडीआई के नियम भी आसान हुए हैं। डिफेंस, इंश्योरेंस और टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में एफडीआई पॉलिसी को और लिबरल किया गया है। हाल के वर्षों में हमने इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग से उसमें भी अपनी पोजीशन को और मजबूत किया है। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई स्कीम्स हो, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के लिए स्कीम्स हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स हो, इन सभी में भारत ने इंसेंटिव्स देकर इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम को तरक्की के नए अवसर दिए हैं। आज भारत पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर है। कुछ समय पहले हमने नेशनल क्वांटम मिशन की भी शुरुआत की है। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की गई है। इंडिया एआई मिशन का भी तेजी से विस्तार होने जा रहा है। यानी हम सिर्फ टेक्नोलॉजी एडॉप्शन नहीं, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के रास्ते पर भी बढ़ रहे हैं। साथियों, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी को मिलने वाला है तो वो हमारे भारत के युवा है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कम्युनिकेशन से ट्रांसपोर्टेशन तक
कई सेक्टर जुड़े होते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में भी इस इंडस्ट्री से कई बिलियन डॉलर का रेवेन्यू और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। यानी चीप मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ एक इंडस्ट्री मात्र नहीं है, ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। इस सेक्टर से ना सिर्फ भारत में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं, बल्कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के क्षेत्र में भी बड़ी प्रगति होने वाली है। आज दुनिया भर की सेमीकंडक्टर चिप के पीछे जो डिजाइन है और उस डिजाइन के पीछे का जो दिमाग है, वो दिमाग अधिकांश भारत के युवा का ही है। इसलिए आज जब भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, तो हम टैलेंट इकोसिस्टम की इस साइकिल को एक प्रकार से कंप्लीट कर रहे हैं। आज अभी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए युवा ये जानते हैं कि कैसे आज देश में उनके लिए नई नई संभावनाएं बन रही हैं, नए अवसर बन रहे हैं। स्पेस का सेक्टर हो, मैपिंग का सेक्टर हो, भारत ने अपने युवाओं के लिए इन सेक्टर्स को पूरी तरह खोल दिया है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को जो इंसेंटिव दिए हैं, जो प्रोत्साहन दिया है, वो अभूतपूर्व है। और इसी का कमाल है कि इतने कम वर्षों में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। अब आज के इस आयोजन के बाद सेमीकंडक्टर सेक्टर में भी हमारे स्टार्टअप के लिए नए मौके बनने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ये नई शुरुआत हमारी युवा पीढ़ी को एडवांस टेक्नोलॉजी जॉब से जुड़ने की नई अपॉर्चुनिटी देगी। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। जब हम इस भावना के साथ नीतियां बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, तो नतीजे भी मिलते हैं। भारत अब पुरानी सोच और पुरानी अप्रोच ये छोड़ चुका है, बहुत आगे निकल गया है। भारत अब तेज गति से निर्णय ले रहा है, नीतियां बना रहा है। हम पहले ही सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में कई दशक खो चुके हैं, लेकिन अब हमें एक पल भी गंवाना नहीं है और अब ऐसा नहीं होगा। भारत ने सबसे पहले 60 के दशक में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सपना देखा था, इस बारे में सोचा था। लेकिन इस सपने के बाद भी, इस सोच के बाद भी तब की सरकारें उन अवसरों का लाभ नहीं ले पाई। इसके सबसे बड़े कारण थे इच्छा शक्ति की कमी, अपने संकल्पों को सिद्धि में बदलने के लिए प्रयास की कमी और देश के लिए
दूरगामी फैसले लेने की क्षमता की कमी। इस वजह से वर्षों तक भारत का सेमीकंडक्टर बनाने का सपना बस सपना ही रह गया। उन दशकों में जो लोग सरकार में रहे वो भी सोचते थे कि अरे जल्दी क्या है, समय आएगा तब हो जाएगा। सरकारों को लगता था कि ये तो भविष्य की जरूरत है, इसका समाधान अभी क्यों करना। वो लोग देश की प्रायोरिटीज को भी बैलेंस नहीं कर पाए, देश के सामर्थ्य को भी समझ नहीं पाए। उन लोगों को लगा कि भारत तो गरीब देश है, भारत सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग जैसी हाईटेक चीज को कैसे मैनेज कर पाएगा। वो लोग भारत की गरीबी की आड़ में आधुनिक जरूरत के ऐसे हर इन्वेस्टमेंट को नजरअंदाज करते रहे। वो हजारों करोड़ के घोटाले कर लेते थे, लेकिन सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट नहीं कर पाए। ऐसी सोच के साथ किसी देश का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हमारी सरकार फॉरवर्ड लुकिंग सोच और फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ काम कर रही है। आज हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में उन एम्बिशंस के साथ बढ़ रहे हैं जो विकसित देशों के साथ कॉम्पीट कर सके। हमारे देश की सारी प्राथमिकताओं का भी ध्यान रखा है। एक तरफ हम गरीबों के पक्के घर बनवा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए भी लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। एक तरफ हम विश्व का सबसे बड़ा सैनिटेशन मूवमेंट चला रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पर भी आगे बढ़ रहा है। हम एक तरफ देश में तेजी से गरीबी कम कर रहे हैं और दूसरी तरफ भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी निर्माण कर रहे हैं, देश को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर चुका है। कल ही हमने पोखरण में 21वीं सदी के भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर की झांकी देखी। वो दिन पहले ही भारत ने 2 दिन पहले ही भारत ने अग्नि 5 के रूप में भारत को दुनिया के एक्सक्लूसिव क्लब में शामिल होते देखा। 2 दिन पहले ही देश की खेती में ड्रोन क्रांति की शुरुआत हुई। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत हजारों ड्रोन महिलाओं को सौंपे गए। गगनयान को लेकर भी भारत की तैयारी और तेजी आई है। हाल में ही देश ने को अपना पहला मेड इन इंडिया फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर मिला है। ये सारे प्रयास, ये सारे प्रोजेक्ट्स भारत को विकसित होने के लक्ष्य के और निकट ले जा रहे हैं, तेज गति से ले जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज के इन 3 प्रोजेक्ट की भी इसमें बड़ी भूमिका होगी। और साथियों, आप जानते हैं आज चारों तरफ एआई की भी उतनी ही चर्चा है। भारत की टैलेंट आज एआई की दुनिया में उसका बहुत बड़ा दबदबा है। आपने देखा होगा पिछले 1-2 सप्ताह से मेरे जितने भी भाषण होते हैं, कुछ युवा नौजवान मेरे पास आए, उन्होंने कहा साहब हम आपकी एक एक बात हर भाषा में गांव-गांव पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने एआई टूल का उपयोग किया और आज मेरा हर भाषण
आप अपनी अपनी भाषा में कुछ ही समय के बाद सुनना शुरू कर दोगे। यानी किसी को तमिल सुनना है, किसी को पंजाबी सुनना है, किसी को बंगाली सुनना है, किसी को असमिया, उड़िया, जो भी सुनना है। ये एआई का कमाल ये मेरे देश के नौजवान कर रहे हैं और मैं तो ऐसी नौजवान टीम का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे लिए इतना बढ़िया एआई के जनरेटेड मेरी स्पीचेस को, मेरे भाषणों को हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में इंटरप्रिटेशन के साथ पहुंचाने का जो प्रयास किया है, मेरे लिए बड़ा आनंद का, खुशी का विषय बना है। और देखते ही देखते सभी लैंग्वेजेस में भी हमारी बात एआई के माध्यम से पहुंचेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत के नौजवानों का जो सामर्थ्य है, उनको अवसर चाहिए। और ये सेमीकंडक्टर का हमारा इनिशिएटिव देश के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा अवसर लेकर आया है। साथियों, एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं हेमंता जी की इस बात से बहुत सहमत हूं कि नॉर्थ ईस्ट में कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतने बड़े इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। हमने ये तय किया है और मैं तो मानता हूं साउथ ईस्ट एशिया के साथ हमारा जो जुड़ाव बढ़ रहा है, तो मेरा नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट एशिया के साथ जुड़ने का सबसे बड़ा ताकतवर क्षेत्र बनने वाला है। मैं साफ साफ इसको देख रहा हूं और मैं इसकी शुरुआत देख रहा हूं। तो मैं आसाम के लोगों को, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आज सबसे ज्यादा शुभकामनाएं देता हूं, सबसे ज्यादा बधाई देता हूं। साथियों, आप सब ऐसे ही भारत की प्रगति को एक नई शक्ति देने के लिए जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मोदी की गारंटी आपके लिए है, आपके भविष्य के लिए है, आपको साथ देने के लिए है। बहुत बहुत धन्यवाद। So I think with that, thanks everybody for attending. There are some refreshments outside on the foyer. And we'll close the session for today now. Thank you very much.